most police officers have little or no knowledge of the juvenile justice system ordinance. Although the laws outline a procedure that is meant to be followed on the police level, the JJSO is not included in the police syllabus for neither new recruits at the constable level nor for officers attending training courses prior to promotion. A number of police officers who reach higher ranks, they don't have to go through formal trainings, because those training courses which are run by the police training schools or colleges are prerequisite for promotion to the next higher rank, because once you become an inspector, then you don't have to go through formal training in that way. You can't teach every subject at the training centers in each course. It's not possible. We have reduced the written part and we have emphasized on the practical, because we need a fit constable. His body language should be different when he is standing at the roadside, not the lethargic, worn out guy with 12 hours of duty. No, we don't want that. That's why we try to inculcate in him the physical side more and to send him for the elite course. There are police officers who are preoccupied with the prevention of crime. They are not sympathetic with any source of crime which increases their workload. They will generally not go beyond the superficial assessment that they are dealing with an offender. But if they are properly trained and sensitized, they will at least try to deal the situation in a sympathetic way. While imparting training across the board is clearly not a priority, a child cell can surely be established which, like the anti-car lifting cell, deals specifically with cases involving youthful offenders. According to the Juvenile Justice System Ordinance, police must hand the custody of a juvenile offender who has committed a non-bailable offence over to a probation officer immediately and then, within 24 hours, produce the child in a juvenile court. The probation officer will make a report on the child's character, educational, social and moral background, information that will later be utilized in the trial. In all of Sindh, however, there are a total of 3 probation officers, 1 in Karachi, 1 in Khairpur and 1 in Dadu. With such a large area to cover, limited funds and stringent time constraints, probation officers are often prevented from effectively carrying out their prescribed duties. इधर शहर के कवर एरिया में तो हम कवर कर लेते हैं, किसी पैरोली को देख लिया, प्रोबेशनर को देख लिया, लेकिन जो शहर से बाहर है उनको हम कैसे देखें? मोटरसाइकिल पे आदमी सक्खर तक भी नहीं जा सकता है, बड़ी गर्मी होती है। हर जज अगर एक भी बंदा रिलीज करे तो हम तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे इस खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में इतने कोर्ट्स हैं। एक दिन में सब आर्डर पास नहीं कर सकते हैं, एक दिन तो एक आर्डर के लिए चाहिए, क्योंकि उसको भी जजमेंट बनाना है। Again, a law has been ordained, but the implementing mechanisms have yet to be effectively instituted. Abdullah Chandio is never called to duty by the police, as he should be, but is ordered to investigate the child's background by the court. Had there been separate juvenile courts, those specialized judges would have been informed enough to hold the police and the probation officer accountable for not adhering to the arrest and remand procedures outlined in the JJSO. However, given that juveniles are tried in lower courts initially, most magistrates and sessions judges are ignorant of the ordinance and therefore unable to ensure that justice is delivered to the children. A few years back, even magistrates in Hyderabad, they remanded juveniles into police custody. The Chief Justice of Pakistan had to take notice of it, and there was some disciplinary proceedings against them. ये प्रैक्टिस रही है मैजिस्ट्रेट्स की, थ्रू अपने रीडर के चैम्बर में बैठे हुए दे देते हैं, देखते भी नहीं हैं बच्चे को। अंडर द सेक्शन 54 आप रिमांड के लिए जब कोई भी बंदा ले आते हैं तो एनी मैजिस्ट्रेट बिफोर whom he or she is produced, they have to see the physical condition of that person, क्योंकि फेटर्स तो टोटली बैन है। हैंडकफ्स भी आप एक्सट्रीम केसेस में लगा सकते हैं जहां थ्रेट हो के ये सीरियस ऑफेंसेस में था, तो उस मैजिस्ट्रेट ने ये चीज़ें ऑब्जर्व ही नहीं की थी। 6 साल मेरे को जेल में हो गया, मैं जेल में सड़ रहा हूँ नाजायज़ केसों में। इतना टाइम ये केसों में रुलाते हैं बंदे को, क्यों रुलाते हैं? गली जुर्म हम लोगों ने किया है, मुजरिम तो पुलिस ही बनाता है बंदे को। In cases like Atiq Memons, where the difference between a hangman's noose and life
lies in the establishment of age. Courts are required by the JJSO to order a medical examination when a defendant's age is in doubt. जब मुझे फांसी की सज़ा जज साहब ने सुनाई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनसे क्या कहूँ, आपने ऐसा क्यों किया, है ना, या आपने ऐसे सज़ा दे दी, आपने क्या, आपको यानी कि कैसे पेपर हैं, आप मुझे बताओ कैसे साबित हुआ खून, है ना। तो उन्होंने बस खाली ऐसे कहा आपके ऊपर खून साबित हुआ है और मैं आपको सज़ाए मौत देता हूँ। जब उन्होंने ऐसे कहा तो वो बैठे नहीं वापस, उन्होंने कुछ सुना भी नहीं, वो चले गए अंदर उठ के। वहाँ के जज साहब जो थे उन्होंने कहा कि नहीं ये सर्टिफिकेट हैं, ये है वो है, इनसे जो है ना उम्र जो है इसकी बिल्कुल वो है। तो हमारे वकील ने उसको चैलेंज किया कि भाई तुम जो है ना इसका मेडिकल कराओ। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट ये माइनर था और अतीक रहमान के वालिद साहब ने बे फॉर्म दिया था, जो NIC बनता है उसमें बे फॉर्म में आ जाता है। उसको जज साहब ने बिलीव नहीं किया, वो रिजेक्ट कर दिया, क्या नहीं इसकी एज 19 साल से ज़्यादा है। मैंने यहाँ एप्लीकेशन दे दी, मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया। अकॉर्डिंग टू मेडिकल बोर्ड के रिजल्ट के हिसाब से 17/4/2006 को इसकी एज बनती है 19 से 20 साल। इसका मतलब ये जब एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट ही वॉज माइनर। और जज साहब ने उस पर किसी पे भी बिलीव नहीं किया, मेडिकल बोर्ड को भी बिलीव नहीं किया। The Juvenile Justice System Ordinance clearly and categorically forbids judges from awarding juvenile offenders the death sentence. Once Atiq's age was confirmed, however, Ghotki's session judge Abdul Rasul Memon discarded the evidence. This is the solemn and public manifestation of high justice, the gross failure of the scales that balance crime and punishment. For the impoverished masses, justice is merely a hollow cliché, resounding through the courtrooms where corruption is so deeply entrenched that judges have become numb to eating the bread earned by blood-soaked indictments. सबसे ज़्यादा मसाइल जो है वो हेयरिंग का है, कैदियों का केस। जज साहबान केस चलाते नहीं। आज भी एक जज था जो तकरीबन 3 महीने से यहाँ कोर्ट में नहीं आया। आज मैंने 2 दफ़ा उससे बात की, कह रहा कि आ रहा हूँ, बाद आखिर में उसने डेट दे दी। अब 7-8 कैदी हैं, वो तो चलो मैंने उनको ब्रीफ कर दिया, वो उनको मुतमिन कर दिया, वरना शाम को फिर कोई ना कोई धरना होता, छतों पे बैठे होते। There are about 1.5 million cases pending in the civil and criminal courts in the country. There are so many reasons for the law's delays. The number of judges, it does not reflect the population. Per population figure, it is said that in Pakistan it comes down to very low, about 15-20 judges per million population. And the same is the case in India. Suppose today you want 300 courts and the government doesn't give you the money. What can the Chief Justice do? I wanted in my time, I wanted 270 or 300 more courts in Sindh. And Abdullah Shah's government said, sorry, we have no money. You see, the answer was, we can't even give you a peon. What are you talking about 300 courts? Unless the government commitment is there, nothing can be done. Justice delayed, as the popular quote goes, is justice denied. In 2008, the capacity for prisoners in 20 jails of Sindh was 9,000. But over 20,000 prisoners were kept there. 86% of inmates in Sindh jails are yet under trial prisoners awaiting sentencing. Often, by the time an inmate is convicted, he has already served most of his sentence time in jail. बस कोर्ट जाना जो है ना किसी जालिम आदमी का काम है, शरीफ आदमी का काम नहीं। वहाँ तो कोई जालिम ही जा सकता है जो उनसे बात कर सकते। हम शरीफ आदमी, गरीब आदमी, हम कुछ नहीं। वहाँ जाते हैं ऐसे बस जैसे बैठ के वापस आ जाते हैं, कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलता क्या है क्या। आपको मुकदमा लड़ने के लिए सोने के हाथ और लोहे के पैर होना चाहिए। सोने के हाथ इसलिए कि आप पैसा यूं फेंकते जाएं, और लोहे के पैर इसलिए कि आप सारा दिन चक्कर लगाते जाएं हर जगह पर। इंसाफ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं। इंसाफ नहीं है। इंसाफ की उम्मीद तो अल्लाह में ना, बंदों में क्या इंसाफ की उम्मीद रखेगा बंदा ना। दिन में ख्वाब यही आते हैं कि अल्लाह माफ़ी दे, अगर निकल जाता हूँ तो अपना कोई अच्छा तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे ना। बाकी रात में ख्वाब इंसान को कभी क्या देखता है, कभी क्या देखता है रात में। बस एक ही दफ़ा याद है मुझे, दुरूद शरीफ पढ़ा था नींद में।